Hello बच्चों, let's read the question. In this question, it is asked कि name the type of waves that which are used for LOS communication, that is line of sight communication, and their range of frequency is asked. What is the range of their frequency? ठीक है. This is my first question. In my second question, it is said there is a transmitting antenna at the top of a tower which is at a height of 20 meter. ठीक है. And the height of the receiving antenna is 45 meter, and it is asked calculate the maximum distance between the two of them so that LOS mode of communication can happen. This is maximum distance between them for satisfactory communication in LOS mode, and the radius of Earth is mentioned here. Radius of Earth. The key concept that is used in this question is communication systems. Let me write down the key concept. Key concept used in this question is communication systems. This is a type of memory based question, so you have to remember the answer and the question that has been asked. You have to remember the answer. So let us start solving both the questions one by one. Let us start with the first question. It is asked to name the type of wave which is used for line of sight communication. The answer, let me write down the solution. This is the solution. So the answer for this question is space waves. Space waves are used for LOS communication. Let me give you a very small brief about what are space waves. Suppose there is an antenna on the ground and that antenna is emitting radio waves to space. In space, there is a satellite which is catching the waves, and the satellite is sending the same wave to a receiving antenna which is kept at a different part of the world. This is how space waves works. This is how line of sight communication works. So the answer for this question would be space waves. Space waves are used for LOS communication. Okay. For the frequency range for space waves is 40 megahertz and above. Since the wave has to pass the ionosphere, we have to give an ample amount of energy to the wave. So the frequency that is used in this wave are very high, so that energy becomes very high. So this is the answer for the frequency range. Let's solve the next question. अगले क्वेश्चन में हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि द हाइट ऑफ द टावर दैट इज द ट्रांसमिटिंग एंटेना. लेट मी राइट डाउन दिस. Let me show the height of the transmitting antenna as HT. Height of transmitting antenna. ये हमें कितना दिया गया है? ये हमें दिया गया है 20 मीटर. ठीक है. और हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटेना, इसको मैं HR लिखता हूं. हाइट ऑफ रिसीविंग एंटेना इसको ये होगा 45 मीटर. एक फॉर्मूला है आपको याद रखनी है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटेना फॉर LOS मोड शुड बी, आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, स्मॉल d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RHT प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2RHR. तो इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो स्क्वायर रूट 2 इंटू ये रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल आर, ये है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ये हमारा आएगा 20
ht plus square root of 2 into 6.4 into 10 to the power 6 into ये है हमारा रिसीविंग एंटेना 45 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमें d क्या मिला था, स्मॉल d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 45 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 20। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 90 होगा ये 45 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 20 इंटू 2 ये 40। अब क्या करेंगे, इसको 64 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 9 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 64 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 4। 64 का स्क्वायर रूट 8, 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस यहां देखो 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2, सो कर लेते हैं 24 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 16 इंटू 10 टू द पावर 3। इसका मतलब 24 प्लस 16 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। इसका मतलब 40 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।